Jai Hind, everyone. So, in this series of Toppers Talk, we have another topper with us. और इनको जितनी बधाइयां दी जाए उतनी कम है क्योंकि 2023 हैज बीन प्रूवन वेरी 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 फॉर्चुनेट फॉर हिम। इनको सिर्फ सीएपीएफ में ही AIR 37 नहीं मिली है। इन्होंने ओटीए और इंडियन कोस्ट गार्ड की थ्रू भी एसएसबी में रिकमेंडेशन पाई है और उसमें भी इनको काफी अच्छी ऑल इंडिया रैंक जैसे 5 और 7 प्राप्त हुई हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज फ्रॉम द होल टीम ऑफ सीएपीएफ एसी मेंटोर्स। Thanks a lot, sir. या सो सूरज कैसा लग रहा है? हाउ 2023 इज मेकिंग यू फील राइट नाउ? सर काफी अच्छा लग रहा है प्लस इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट या जो भी एफर्ट्स थे प्लस guidance from teachers and like your team also, and I'm really glad I'm having this achievement now. ओके सो बेसिकली सूरज आप अपना बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे कि कैसा रहा है? आपने कितनी बार एसएसबीज दी और फिर Okay. सीएपीएफ का ये कौन सा अटेम्प्ट था? हाउ डिड यू लाइक योर एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली? Okay, just giving a brief background of myself. I did my schooling from St. Xavier School, and it was from science stream. And then I did my political science honors from Delhi University. Then after that, I gave entrance exam for LLB and B.Ed for Delhi University, and I cleared both of them. But eventually, I joined B.Ed in DU. Then currently, I am pursuing masters in political science. And talking about my SSPs, I till now had given around 6 SSPs, and in that I got two recommendation. In I would say in every third SSB, I was recommended. And first was it was Indian Coast Guard, and it was all India rank 5. Then in seventh, it was through CDS entry, basically OTA, in which I got rank 7. And talking about my CAPF, it was my third attempt. Like in 2020, I gave my first attempt in my like in final year of my graduation. I was not able to clear the 10 part only in my first two attempts. And in 23, 22, fortunately, I was able to clear it. Okay, so it has been a long journey but a fruitful journey, right? Definitely, I was uh, worth it. yeah, it was worth it in the end. So Suraj, basically CDS and Coast Guard and 6 SSBs and then 3 attempts in CAPF. So you are a force enthusiast. So you Definitely. were always dreaming yourself to be in uniform one day, right? So Yes. from where does this craze, where does this ambition grew from? See, telling you the exact motivation. So in my class 11th only, so there were some officers in my village. So it was kind of first, kind of motivation that उनको देख के यार वर्दी में जाना अब तो. And also my father motivates me. My father in Delhi Fire Service, and he's also in a very good position. So he motivated me to go for civil services after my class 12th, and that's the reason I switched my stream from science to political science my graduation. So my ambition was clear, and also in my graduation I got to know various other exams where I can live my dream of uniform service. So there was serious entry and CAPF, and also FCAT and this CGCAT. So this was my only aim, and so I'm just happy to achieve it, and currently pursuing other goals too. ओके सो बेसिकली अब जैसे कि 2 एसएसबीज क्लियर हो गई हैं, सीएपीएफ में भी बहुत अच्छी रैंक आ गई है। सो बेसिकली आजकल घर का माहौल कैसा है? हाउ डू यू स्पेंड योर डेज? हाउ एवरीबडी रिएक्ट्स टू यू? इज एवरीबडी हैप्पी अराउंड यू? आर यू हैप्पी? लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ? डेफिनेटली खुशी का माहौल तो है, बट माई पेरेंट्स वो लिटिल न्यूट्रल कि जैसे पहले रैंक आई थी ना, सो दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ मी. एंड जब मैंने बताया कि CAPF हो गया, सो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा तो बताओ OTA जाना है या CAPF. तो करंटली वो भी डिबेट चल रही है बिकॉज OTA की जो ट्रेनिंग अक्टूबर में है, एंड सो दे वाज क्या कहते हैं डिबेट चल रही है. प्लस everybody is happy. Even my sister, who is very motivates me. She was the most person to get excited. अच्छा, Yes. वो हमारी फैमिली में एक इंसान होता है जो हमसे भी ज्यादा खुश होता है। सो Yeah, दैट इज she योर is सिस्टर। या definitely. सो बेसिकली इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। सो आपने बताया कि 6 एसएसबीज में से 4 एसएसबीज में यू हैव आल्सो बीन लाइक नॉट बीन रिकमेंडेड and also Yes, first attempt of CAPF and second attempt of CAPF you could not qualify the written. yes.
So what do you think changed in these attempts? Like which made you to come into the list and finally you're talking to us? So talking about SSB first. So in SSP, in my first two SSP were in a back to back within 1 month. So I didn't take any coaching back then. I had no guidance. Not in touch with anyone who have given SSP before. So it was kind of in a quick succession. I was not able to clear it. Then after that, I realized what I did wrong and how should I change my approach. So I got in touch with one of my friends, Shashank, his name is. So he was also got recommended twice in serious entry. So then I got to know that yeah, interview में ऐसे बोलना होता है. We should not, we should answer them the way they want actually. So we have to show ourselves effectively. So this was what changed me. Plus, practice is definitely there. I did practice a lot. I used to send my answers to my, friends also, teachers also, just check how's it, or what should I do to improve it. So this was definitely there, and after that, I got recommended, and this is what I did: just practice plus guidance. Guidance mainly of interview, I would say. Okay. Secondly, talking about CAPF. So in my first attempt, I just got 80 marks in paper one. I was not, preparing well because I should have go through the basic sources. I just go through the coaching notes, and this was the mistake I realized. In second attempt, I got 136, I suppose, in paper one, so just 2 marks from the cutoff. And then I realized I should, I have to give my best now because competition is really rising. You also can see how much the competition has, raised from past couple of years. And in my third attempt, I just mug up the basic parts, especially the NCERTs, and I focused upon the math part, which is quite scoring. So fortunately, from 80, I able to achieve 160 mark in my 22 this mark sheet, and in the interview also it very went well. These both helped me to achieve a good rank. Okay, so basically बेशक वो एसएसबी हो या फिर सीएपीएफ हो, you just analyzed कि gaps कहाँ पे और उस gaps को कैसे fill करना है, that is what you did, right? Definitely, yeah. So basically आपने जैसे बोला कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा राइज कर रहा है. सो आजकल के जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 2020 से मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किया था खुद. तो फिर मैंने देखा है कि पहले जमाने में मतलब कि 3-4 साल पहले मैं जमाना बोल रहा हूँ, वो जो टाइम था, उस टाइम जो मार्क्स आते थे पेपर वन में, इवन इफ यू आर स्कोरिंग लाइक 135 140 मार्क्स, even then you would have got into the list. Definitely. But these are the times if you're not scoring like 160 165, even candidates are scoring 200 plus marks in paper one. So what do you think has changed, and how do you think we should go about paper one? Specifically for CAPF, I'm asking. So how do you think we should go about paper one, because competition is rising and paper has become a little dicey? Definitely, I'll see. I have also gone through many toppers mark sheet or mark sheet of those who are not recommended. So what I felt was that you have to perform, almost above average in all three. This basically paper one, paper two, and then interview. Talking specifically about paper one, first of all, you should have sources which you can trust upon. You don't have to switch it. For example, in my case, it was NCERTs plus some advanced notes. For example, for economy, I referred Brunel's notes just to fill the gap. So short, nothing is left out. And secondly, thing is practice. You have to practice PYQs of CDS and these UPSC exams. And thirdly, you have to revise it. These are three things you have to do and focus on key scoring areas. That is science and mathematics. Without it, you have should not dream of getting your name into the name list because competition definitely rising. Even some of the people scoring 180 plus in paper one not able to get their name in the list. Secondly, also paper two should also be key balance. वो balance नहीं करोगे, then you don't have to wait for the name. You're out. So competition definitely, and it will be rising only. In 23, you can see cutoff in I think in my case only 22. Cutoff was quite similar, and irrespective of the vacancies. So paper one has to be, you should be a strong area, and paper two you should do quite a lot of practice. For example, I also gave CAPF AC mentor only. Unfortunately, I was not able to perform up to the mark. I was, lack of sleep.
And thirdly, interview, definitely guidance has to be there. So acing the three definitely let you through. या सो पेपर वन के बारे में बात करना अगर मैं कंटिन्यू करूं तो बेसिकली जैसे मैं देखता हूँ कि जो पेपर वन में एक बुक लिस्ट फॉलो करते हैं टॉपर्स, राइट? बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एप्टीट्यूड. सो ब्रीफली तुम्हारी बुक लिस्ट क्या रही थी विद रिस्पेक्ट टू पेपर वन? Okay, so starting from the basic topics, for example, subjects. Firstly, NCERT. So my book list was old and new NCERTs, themes 1 and themes 2, 6, 7, 8, and Satish Chandra was there, and R.S. Sharma for the modern medieval. And Spectrum also I referred because facts were there. And also in weekends I tends to go through the lucent part because I could revise the facts. So this is the basic source for history, and also history is getting tougher and tougher year by year. So one has to refer these sources. Talking about geography, solely NCERT, still class 12. Nothing more I did. And secondly, I refer to mappings, sometime in news or any YouTube videos. Regarding science, only NCERT, still class 10th, and lucent part, nothing else. For mathematics, I refer to YouTube videos so that I can go through PYQs. Also, some of the topics that I can sharpen my topics too. Yeah. Talking about economics, it was basically Munnas and notes only. Yes. So basically जैसा आपने कहा कि हिस्ट्री का जो डिफिकल्टी लेवल है with respect to other subjects, it is rising. And also there was this notion 2-3 years back that UPSC doesn't ask much questions from ancient and medieval part of the history. But these days there has been a paradigm shift, and UPSC has been asking many questions from ancient and medieval, right? So Definitely. basically हम ancient और medieval को भी अब बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. सो बेसिकली अगर हमें 160 प्लस स्कोर लाना है तो हम कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? See, as I said before, competition will be rising year by year. Secondly, you should not take risk. While preparing for the exam, you still have, about 1 year left. Don't leave any subject. Secondly, stick to the resources. अगर ये कर लिया तो यही पढ़ना है. And revise it multiple times. And give test series. There are many test series in the market, plus in the online platform also. So giving test, revise it, and you should aim for 160 plus. To be on safer side, I would say. Yeah. So that is it for paper 1. So moving on to paper 2. So जब भी मैं कैंडिडेट से बात करता हूँ रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, द ओनली फेयर इज पेपर 2. एंड इनफैक्ट अगर सूरज की बात की जाए तो सूरज हैज डन excellent in paper 1. He has scored excellently in interview, that is the personality test, but his score also is little low in paper 2, right? You have scored around 78, right? Definitely. Yeah, 78. So basically what do you think, why there is so much gap in paper 2, and also what is this language phobia which candidates usually have regarding paper 2, like कि सर हमसे continuity नहीं बनेगी ऐसे में, हम इंग्लिश कैसे लिख पाएंगे, हम कैसे अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बना पाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स कैसे अच्छे लिख पाएंगे? सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज नाउ यू हैव बीन सेलेक्टेड विद अ वेरी गुड रैंक, बट स्टिल यू थिंक, एंड आई थिंक जिस कैंडिडेट के जिस पेपर में कम मार्क्स आते हैं उसे सबसे ज्यादा पता होता है कि उस पेपर में क्या किया जाना चाहिए. सो व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन पेपर 2? Definitely. Yeah, there's two things before I tell you about it. First of all, I scored low marks, but I did practice a lot. And secondly, I was not able to sleep well that night before, so I just had a sleep of 2 hours. So definitely my content quality was low. I also told Sir Janardhan sir that sir, अच्छा नहीं गया वाला. So बोले कोई ना देखी जाएगी अब. So also I was quite lucky interview में that sir asked me a couple of questions which I will telling you afterwards about it. Okay, so telling about paper 2, first of all is practice and practice. So one should took any tests or anything that they can rely upon. For example, I opt for CAPF AC Mentorship test series only, and in none of the tests I scored less than 90. So I was quite confident that 90 तो आने ही हैं. But you never know कि real exam में क्या होगा. Like in my case. Secondly, grammar part, definitely I would say I did not put much effort, and because उस time मेरे SSB भी चल रहे थे, and I got recommended for Coast Guard just a week before, and also मेरे medicals की time थी, so I was not able to prepare well for the grammar part. Revise नहीं कर पाया था. I did make notes, and so there's two things I would like to say. Grammar part को focus करिए because it is very scoring. 25 में 20 plus आराम से आ जाएंगे. And secondly, I did talk to one of my topper friends, rank top 5 में ही है उनकी.
So he also said this practice की थी, and he tends to make keynotes, facts हो गया, quotes हो गया, और arguments में just he make a very attractive kind of flow कि argument ऐसे लिखना है, सब headings को mark करना है, underline करना है, facts को लिखना है. He tends to write at least 3 facts in each argument and against me. So this was strategy he followed. So one should make their own strategy जो भी like ना है. And thirdly, what I felt was time management was lacking. So जैसे मेरे quality थोड़ी सी कम थी. Plus I just able to finish my paper to टाइमिंग का इशू डेफिनेटली रहेगा that जो भी है क्या कहते हैं प्रैक्टिस से ही खत्म होगा. ओके, सो बेसिकली अगर पेपर टू की बात की जाए तो फिर हमें प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ही है. टाइम बिल्कुल है. मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पेपर कंप्लीट नहीं करोगे तो यू विल एनीवेज लूज मार्क्स इन पेपर टू. सो अगर लेकिन Yes. इसी में मैं कंटिन्यू करूँ तो हाउ इंपॉर्टेंट वाज न्यूज़पेपर विद रिस्पेक्ट टू पेपर टू? Oh yeah, definitely. Yeah. Telling about the newspaper or current affairs. So होता क्या था ना कि जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया. So there are many key reports that comes in the Hindi newspaper. So जब आप पढ़ोगे तो लगता है कि हाँ ऐसे रिपोर्ट लिखते हैं. The wording they use, the formal kind of lines they use. तो वो आप यूज करोगे पेपर टू में, that will really be helpful. Not only in my case, मतलब मेरा तो खैर अलग केस है. मेरे फ्रेंड्स ने जो करते गया थे द हिंदू न्यूज़पेपर लिया, रिपोर्ट आ गई जैसे केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ. So the way they started, 25 men started this, जो भी है, they intend to write it and practice it. One of my man, he scored 120 plus. So I was just like, हुआ क्या भाई तुमने करा कैसे? So he did put a lot of efforts. पर हो गया और उसके हल्के नोट्स बनाता था. ऑल्सो यार एक तो टेस्ट सीरीज होगी जैसे विजन के हो गया. सो दे टेंड्स टू फॉलो कि उससे लेके हम नोट्स ला लेंगे की जो टॉपिक्स हैं जैसे एआई का चैट जीपीटी था हमारे टाइम पे एंड तो भी की उन पे शॉर्ट नोट्स बना लिए. दिस आल्सो हेल्प इन आर्गुमेंट राइटिंग आल्सो. और रिपोर्ट में फैक्ट्स आ जाते हमारे पास. तो जस्ट मेक स्मॉल नोट्स इफ पॉसिबल. अदरवाइज कोई आई वुड से करंट अफेयर्स मेंस पर्सपेक्टिव वाले ले लो और जस्ट रिवाइज इट सो दैट दिमाग में फैक्ट्स रहें और विद इन मिनिमम टाइम में आपके याद आ सके और लिख सकें उसको. ओके, सो बेसिकली अगर मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो रिपोर्ट में मुझे न्यूज़पेपर से एक तो लैंग्वेज सीखनी है, ऊपर से ये या देखना है कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है. उसी के साथ साथ मुझे कुछ टॉपिक्स के क्रिस्प नोट्स बना लेने हैं जिससे कि पेपर में मुझे फटाफट फटाफट फैक्ट्स लिखने में आसानी हो. डेफिनेटली. अच्छा, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए ही, बिकॉज इट्स अ मेजर पोर्शन दीज डेज एंड यूपीएससी रिलाइज हेविली ऑन इट. तो उसके लिए एक तो न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ना बहुत जरूरी है ही. उसके अलावा आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे? So telling you the truth, so विजनाइज तो मेंस पर्सपेक्टिव थी ताकि जो भी ना की पॉइंट्स से वे फॉरवर्ड हो गया वो मैं लिख सकूं. सो उसके बाद सीएपी बेस्ड मेंटर के उस टाइम वो आई बुकलेट स्टार्ट नहीं स्टार्ट हुई थी तो वो फॉलो की थी मैंने. और बाकी ऑनलाइन भी आती हैं टॉप 100 क्वेश्चन हो गए तो 50 क्वेश्चन हो गए. तो वो नहीं पढ़ा था बिकॉज करंट अफेयर इज समथिंग दैट कितना पढ़ोगे उतना कम है. सो दिस वाज माय प्रायोरिटी कि वो पीडीएफ हो गई बेसिकली थी प्रीलिम्स वो क्या कहते हैं पेपर वन पर्सपेक्टिव से कि ये फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जैसे एक्सरसाइज कौन सी हुई है और कहाँ पे कैसे जो भी नए नए एग्रीमेंट्स हुए हैं जो भी नया स्पीशीज मिली हैं जो भी है. सो फैक्ट्स पे काफ़ी फोकस किया मैंने. एंड सेकेंडली यूट्यूब वीडियोस था एक दो बार देख ली 2x पे देख ली. ठीक है पेपर से एक दिन पहले देख ली बिकॉज आई ऑल्सो हैव लेस टाइम बिफोर द एग्जाम. सो करंट अफेयर्स को मैंने ऐसे टाइम दिया था. ओके, सो इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में देयर इज दिस कांस्टेंट डिबेट. सो व्हिच न्यूज़पेपर डिड यू फॉलो एंड व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक व्हिच वन शुड वन रीड? जैसे यार मुझे भी dilemma था बट आई जस्ट स्टिक टू द हिंदू न्यूज़पेपर ओनली because while analyzing PYQs of UPSC examination, so most of the questions they did come direct from the Hindu newspaper. Plus, Indian Express is also good to build up your opinion, but I tends to I would say minimize your resources. So just focus on the Hindu only. Yeah. So the quintessential thing is to read only one newspaper and do not dilute and read two newspapers because that will take whole up your day. So Uh, yeah. उसके बाद पीईटी एंड पीएसटी आता है एंड दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस दो, बट उसकी 4 स्टेजेस होती हैं. तो जिसमें कि एक स्प्रिंट होती है 100 मीटर की, एक लॉन्ग एक 800 मीटर रन होता है, एक yeah, लॉन्ग जंप होती है, उसके अलावा एक short शॉर्ट put. पुट होता है. So, did you prepare for it, or you think like one does not need to prepare for it? And what all sources did you refer to? किससे guidance ली, क्या किया? How was your experience in PET? So first of all, never take anything lightly because people with getting very good marks
they were either physical out or good medical out in the very small issues. So regarding my preparation, I did practice. So regularly running की थी मैंने, and also with one of my friend, I went to JLN Stadium. वहाँ पे मैंने एक बार full दिया था through just 100 meter हो गया, 800 short put, long jump. Before 1 week before my I would say physical. So I have my physical on second day only, 28 June I would say. So ऑल्सो वन शुड रिमेम्बर दैट वहाँ पे ना हल्का सा लग चलेगा। होता क्या है ना, लॉन्ग जंप में बेसिकली ना, वन ऑफ माय फ्रेंड इज वेरी गुड लॉन्ग जंपर, पर वहाँ पे वो बाहर हो गया। So, हल्का सा एंजाइटी लेवल रहता है वहाँ पे। सो जस्ट टू कर्व माय नर्व्स डाउन, आई डिड प्रैक्टिस कि यहाँ से 20 स्टेप्स लेने हैं, कोई फाउल तो नहीं करना, बिकॉज 3.5 मीटर और शायद 4.5 इज नॉट अ वेरी बिग मार्क, फाउल नहीं करना है। एंड ऑल्सो स्टे कॉन्फिडेंट कि इट इज नॉट अ वेरी बिग physical that you have to give. Just be confident and give your best. Yeah. तो सिमिलरली जब मेरा फिजिकल हुआ था तो देयर वाज दिस पर्सन हु वाज जंपिंग लाइक एक्सीडिंगली वेल। Okay. 3.5 मीटर्स की जगह वो शायद 4.5 मीटर या 5 मीटर कूद रहा था, पता नहीं। एंड व्हाट हैपेंड इज कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज ही वाज, वो इनिशियल लाइन पे बार बार पाँव रख दे रहा था। बिल्कुल So बिल्कुल। that all can happen. So you should prepare for that. And as Suraj told कि कुछ किसी भी चीज को lightly तो बिल्कुल नहीं लेना है, हर चीज की प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि हम एग्जाम में पूरे साल मेहनत करें एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लेकेडेसियल एटीट्यूड वी फेल टू क्लियर द पीईटी विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज इफ वन प्रिपेयर्स फॉर। उसके बाद हमारे पास आता है द ग्लोरिफाइड यूपीएससी भवन, जिसके अंदर हमें जाके इंटरव्यू देना होता है। एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट बिकॉज इट इज कॉल्ड द टेस्ट ऑफ ए पर्सनालिटी। सो व्हेन वाज इट? एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपने पहले मॉक इंटरव्यूज दिए थे? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन के बेसिस पे जाते हैं, क्या आपने मॉक दिए थे? और फोकस See, कहाँ पे था, डैफ के ऊपर या फिर लाइक करंट अफेयर्स के ऊपर या फिर कुछ और भी चीजें? और कैसा रहा पूरा प्रोसेस? okay. So telling about a mock test, I just gave two mocks. First was offline and second was online. So regarding the offline, I just given forum IS mock test just to get the environment. So Anna कैसे है, how to save, just not to do silly mistakes, just to be on safer side. And on एक online mock था, Prabhat sir was there. He scored 67 rank in 2021. So I just gave him my online mock, and he also guides me how to give, just to minimize the any mistakes. And secondly, regarding my experience, or just before that, telling you how I prepared for DAF and current affairs. So DAF, I did prepare like what other candidates they did. So DAF prepare किया मैंने, interviews एक महीने पहले के पढ़े मैंने, जैसे द हिंदू के ऊपर I was very well through some of the जो भी channels हैं YouTube के, like जो मेरा DAF अगर पढ़ोगे आप, so it was kind of related to political science. तो डिग्री political science की है मैंने। उसके बाद जो है हॉबीज में मैं लिखा था दैट इज रिगार्डिंग न्यूज ओनली। सो मुझे लगा था कि न्यूज तो पढ़नी पड़ेगी मुझे, अदरवाइज इट विल बी सेटबैक फॉर मी अगर आंसर नहीं दे पाया तो मैं। तो इसे करंट अफेयर्स प्लस डेफ, डेफ से थ्रोली किया था एक एक चीज को, स्कूल कहाँ है मेरा, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ली, देन कॉलेज कहाँ था, देन सम ऑफ द क्वेश्चंस। थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे एसएसबी का, तो थोड़ी हेल्प की मेरे उसने, प्रिपेयर थे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू आंसर्स। उसके बाद देन आई फॉर्चुनेटली आई हैड फर्स्ट डे फर्स्ट शो था मेरा भी, तो वहाँ गया मैं। देन फॉर्चुनेटली जो मुझे मिला इंटरव्यू बोर्ड, इट वाज सर राज शुक्ला बोर्ड। आई टेलिंग यू द ट्रूथ, थोड़ा अलग चलता है इसमें इंटरव्यू में। तो हुआ क्या, आई जस्ट वेंट इनटू द रूम, सो सर ग्रीटेड मी कि सूरज सिट डाउन, थैंक यू सर। सो क्या कर रहे हो आजकल? तो बोला सर आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम सीडीएस एंड सर अक्टूबर ज्वाइनिंग है, तो जस्ट उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर यहाँ रिकमेंड हो, then why did you came here? Sir, so I was not able to give him good answer. कन्विंसिंग तो आंसर। वो, हाँ, तो ये वाज लाइक दोनों अच्छी है, देख लेना कौन सा करते हैं, तो बाकी चलो आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं आप। तो वाज वेरी सपोर्टिव आल्सो, कि उन्हें पता था कि ये हो चुका है बट आप आया है, ताकि आई जस्ट गिव यू वन कोट, सर नेवर लेट योर वेपन्स डाउन, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसके बाद बोले सर चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर इंटरव्यू। टेलिंग द एग्जैक्ट पार्ट, हुआ क्या था, मैं डेफ में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, they just put my DAF down. They asked me about my SSB. तो हुआ क्या सर, तो मैंने बोला सर आई गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस। तो बोले अच्छा तो हो चुका रिकमेंड, हाँ। तो उन्होंने पूछा कैसे क्या रहा, देन जस्ट दे पुट माय DAF डाउन, और उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं DAF से। देन जस्ट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड करंट अफेयर्स एंड IR पार्ट, and Raj Shukla sir is famous for its IR part, IR content. So he asked me very
IR related question. For example, that time the Wagner group of Russia was in hot news. तो वैज्ञानिक क्या इशू है, क्या रहा, उनका रिलेशन क्या साउथ अफ्रीका के साथ, ये एंड ये, एंड ऑल दी अदर थ्री मेंबर्स दे आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट जैसे क्या हो गया, वो सूरज, तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, आई टोल्ड एसएसपी, व्हाई एसएसपी, मैंडेट क्या है इसका, चलो ठीक है, सो देयर इज वन वेरी गुड हॉबी ऑफ योर दैट इज शेयरिंग नॉलेज, क्या है ये बताओ, एंड ऑल्सो दे टेंड्स टू कन्वर्स विद ईच अदर, तो ऐसे माहौल ऐसा बन गया था कि बात चल रही है, सो थोड़ा हल्का महसूस होता है कि हाँ सही चल रहा है, बाकी दे आर ऑल्सो लिटिल कन्विंस्ड फ्रॉम माई आंसर्स, तो बेसिकली टेलिंग यू फ्रैंकली आईआर पार्ट पे क्या, और ये तो क्वेश्चंस थे जो मैं आंसर नहीं दे पाया बिकॉज दे वर लिटिल डीप, सो शुक्ला सर आस्क्ड मी सम ऑफ द की टर्म्स, सो सर आई डोंट नो कि क्या आंसर होगा उसका, but definitely confidence plus if you speak in a very I would say convincing manner during जब आंसर दोगे आप और ढंग से कन्विंस कर पा रहे हो इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड इंटरव्यू मार्क, ये वो स्ट्रेटेजी थी, एंड ऑल्सो गॉट सेटिस्फाइंग मार्क इन इंटरव्यू, जिसकी वजह से लिस्ट में नाम आया. Okay. So Suraj is being very humble. He has not secured like satisfying marks. He has secured 120. That is one of the like prolific scores in the history of CAPF. So 2021 में तो 120 was the highest mark. So yeah. डेफिनेटली So Suraj basically जो interview था वो SSB कैसी रही और why to join CAPF and international relations के ऊपर चला. And you're saying that interview can be luck, and I agree to that, and I'm a witness to that. That interview can be an absolute luck, and it can make your day and it can break your day, and you have no control over it. So डेफिनेटली the only thing you can do is that you can prepare everything which is in your hand. फॉर So श्योर. so Suraj, after the selection, merit list में नाम आ गया है, and everything is like yeah, everything is good. SSBs में भी clear मतलब clear तो हो ही चुका है. तो अब मैं तुम्हारी CAPF में first preference क्या है? सो इट वाज सीएसएफ ओनली इन CISF. दिस बी. Okay. सो मेरा So टेलिंग यू दी टेलिंग माय पार्ट, सो मेरा माइंडसेट ये था अगर टॉप 50 रैंक आ गई तो सीएपीएफ जाऊंगा, वरना ओटीए जाऊंगा, ये में था मेरा. फॉर्चुनेटली रैंक कैसे आई है कि आई एम नॉट, पता नहीं कौन सी प्रेफरेंस मिलेगी, बट आई एम सेटिस्फाइड इन बोथ. okay. So basically with AIR 37 most probably हो भी सकता है कि CISF या मिल जाए. हाँ, so basically अभी there is this debate about OTA and CISF. Both will डेफिनेटली give you the opportunity to serve in uniform, but in CAPF you will get a lot more opportunity for people to people interaction, and also they say that the work life balance is little bit up, but initial days में तो वो सारी जगह ही थोड़ा off रहता है. So डेफिनेटली. what is this confusion and what are these pros and cons which you are weighing with respect to army and with respect to CAPF? सी पहले तो ऐसा था कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, अब ऐसा हो गया दो दो सिलेक्शन हो गया, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या. Uh-huh. सो सो बात ये थी कि ना रिगार्डिंग द आर्मी एंड दिस, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सीपीएफ में हो जाएगा तो आई विल जस्ट जॉइन इट एंड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. तो बिफोर दैट आई गॉट रिकमेंडेड फॉर ओटीए, सो माइंडसेट मेरा था कि अब आर्मी में जाना है, आई शुड प्रिपेयर गुड अमाउंट ऑफ इन फिजिकल फिटनेस. उसके बाद सिलेक्शन हुआ, सो घर वाले बोले कि करना क्या है अभी, सो द डिबेट वाज देयर, सब रिश्तेदार वगैरह आए तो बात हुई, तो जस्ट टेल देम कि मेरा मन है कि एक बार दूं सिविल सर्विस, हुआ तो ठीक है वरना सीपीएफ तो है ही, एंड आर्मी इज आल्सो वेरी गुड, इट्स वेरी attractive kind of I would say service, because I have friends in OTA also, AFA, INA एंड IMA सब जगह ही हैं, तो बोलते हैं कि लाइफ अच्छी है काफ़ी, चांसेस मिलेंगे, यूएन डेलीगेशन होता है, सेकेंडली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो थोड़ा दिल में चलता रहता है फिलहाल ही, बट वी हैव टू मेक चॉइसेस. सो करंटली जो मेरा माइंड है टू गो फॉर सीएपीएफ ओनली. Currently your mind is to go for CAPF. या तो यूएन टेन्योर की अपॉर्चुनिटीज या डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो दोनों ही जगह बराबर है, और इनफैक्ट सी आर्मी में तो ऐसा होता है कि जो यूनिट होती है ना वो तो हमें डेपुटेशन के लिए भेजती है, जबकि सीएपीएफ में एन इंडिविजुअल ऑफिसर कैन आल्सो गो फॉर डेपुटेशन. तो so these are the small things that I don't know exactly right now, but they are in this service, तो अपने बताएंगे ना वे कि जो बेटर है उनका. सो बेसिकली जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, लाइक माय brother, he's in army right now and he's a major ranking officer, and I have been selected into CAPF. So I kind of know both the like things very well, and I think that whether you choose CAPF or army, the other side will always look the brighter, right? डेफिनेटली. एंड वो जिंदगी का नियम है कि हम जब भी हमारे पास दो चॉइसेस आती है जो हम चुनते हैं, दूसरी वाली वो बड़ी होके नजर आती है,
right? ये होता है definitely है. For example, I got into IIM, TIS, and CAPF all together. Okay, So I just made a choice that I will leave TIS and I will leave IIM and I'll join CAPF. So then right now I'm feeling, अरे IIM कितनी बड़ी चीज है, TIS कितनी बड़ी चीज है, right? So that will happen. did you Jokes did, apart, did you did you regret it now? no, I don't regret it. But the moment you make a choice, after 2 3 months, you will always feel like the other choice is always the greater choice. Okay? Definitely, Because that because is the you human psychology. Yeah. definitely this was the Uh, same psychology I'm going through. yeah. So that is what happened. Also, Suraj, because this preparation is a long journey, right? Because you said that you have given 6 SSBs and 3 attempts in CAPF. So many candidates are going through this. Even some people are preparing for CSC alongside, right? So what happens is because we face continuous failures in the examination है ना, कभी प्री नहीं निकला, कभी पेपर वन CAPF का रिटर्न ही नहीं निकला, कभी CDS में कोई GS में रह गए, कभी SSB में रह गए, कभी रिकमेंड होकर मेरिट में रह गए. सो दिस फेलियर्स Definitely. का ये जो तांता है लगा रहता है. एंड सक्सेस बड़ी ही रेयर होती है, वो बहुत रेयरली आती है, राइट? तो इतने कॉन्टिन्यूस फेलियर्स और इतने लंबे टाइम तक हम अपना मोटिवेशन और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे एक सुकून में रखें? व्हाट आर योर सजेशंस अबाउट? See, there are two things. First of all, I have experienced strain out, conference out, medical out also I have experienced. Then, paper out, I would say not clearing the exam. So I've experienced everything till now regarding the defense services. So just one thing that keep me motivating, this is my, why I started in the first place only. That whenever I, got demotivated, सोचता हूँ यार मैंने start क्यों किया? Then I look back यार 2017 में I just switched my, this team. I did get opportunity to join DTU in Delhi, DTU for BTech, but I make choices, and I, stand by it. या मैंने चूज की थी, अब इतना आ चुके हैं कि पीछे नहीं मुड़ना है. तो करता गया. एक होता है बीच में क्या चलते रहते देखी जाएगी, गो विद द फ्लो. तो होता क्या है, एक फैक्ट है कि whenever I prepared the least, I got the maximum output. तो कोस्ट गार्ड में मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया और देखी जाएगी, एंड आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू उसमें. एंड ऑल्सो इन सीरियस कि प्रिपेयर नहीं करके देखी जाएगी, अब तो यार मेडिकल आउट भी हो गए हैं कोस्ट गार्ड से, अब देखी जाएगी. एंड आई ऑल्सो आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन माई बैच. तो मैंने रियलाइज किया कि यू शुड नॉट गिव अप. इवन यू फील लाइक गिविंग अप, जस्ट डोंट गिव अप, go and achieve your aim, because ultimately at the end you just an inch before your ultimate aim. ये मैंने रियलाइज किया इवन इन CAPF. तो मुझे लगा था ड्यूरिंग इंटरव्यू यार थोड़ा और अच्छा देते ना हो जाता मेरा, शायद लग रहा नहीं होगा इंटरव्यू में. And I was quite amazed कि they were satisfied by my answer when I saw my card sheet. और जब देखा मैंने पेपर 2 में यार बहुत कम मार्क्स थे. you know everything is planned by Almighty, and you should trust yourself and your hard work that you're putting in. यस. सो इतनी लंबी जर्नी में जैसा तुमने बताया कि मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल अपना अकेले तो रहना ही नहीं है, और गिव अप वाला जो नोशन है वो तो दिमाग से निकाल ही देना है. सो बेसिकली बिकॉज ये लंबी प्रिपरेशन है, सो हम लोग जो होते हैं कई बार कट ऑफ भी हो जाते हैं. वी ओनली गो डाउन कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वी हैव टू अचीव आवर एम एंड एवरीथिंग. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज we stop interacting with relatives, with our friends, and what happens is we also cut ourselves off from social media platforms. So what did you do to keep you sane during the preparation? See, I also did not join any social networking sites. Just now I also joined Instagram. And regarding my how I kept my mental health okay. So I have my friends where I talking to them. Also, fortunately, going through so many SSBs, I made a lot of friends. तो इंटर काफी अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो we tends to do a video chat and we tends to meet often. Secondly, my parents, especially my mother and sisters, they tends to उनको जितना भरोसा मुझ पे मुझे खुद पे नहीं था, टेलिंग द ट्रूथ. तो कहते तो हो जाएगा, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, करता रहे. सो दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग. एंड मुझे ऐसा लगा नहीं कभी मैं अकेला हूँ. माय फ्रेंड्स एंड फैमिली वाज डेफिनेटली देयर विद मी. दो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आई वाज नॉट एक्टिव बिकॉज आई थिंक कि यार टाइम इतना है, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं. तो ये मेरी थिंकिंग थी. बट डेफिनेटली फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट. अदरवाइज this SSP and the interview part in CAPF, this is all about your personality. अगर बात नहीं करोगे, फिर एक्सप्लोर नहीं करोगे, then you definitely will not be scoring up to your potential. Okay. So अभी जो 2023 वाले जिन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, राइट, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे अभी PET आने वाला है एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द पर्सनालिटी टेस्ट. सो व्हाट द फोकस शुड बी एट दिस मोमेंट? See, first of all, if you are confident that you will be clearing
start preparing for PET. से आने आ जाएगा at the end of the year में, and never and ever take anything lightly. जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्लियर हुआ है कि आसान था यार, PET तो ऐसे हो गया था मजे मजे में, but never take anything granted. जैसे आई हैव एन एग्जांपल जो शॉर्ट पुट में रह गए थे, दे वेरी वेल बिल्ट, शॉर्ट पुट में बिल्कुल क्या कहते हैं फाउल हो गया उनको, रह गए. सो जस्ट प्रैक्टिस ईच एंड एवरी पार्ट. एंड ऑल्सो कुछ अगर मेडिकल इशू है, लाइक कुछ DNS इशू वाले इस पर जो थे मेडिकल आउट हो गए, एंड यू ओनली हैव 1 day टू apply for the re-medicals. So just make sure that you are medically fit. कोई डॉक्टर हो तो उनसे कंसल्ट कीजिए. And if you luckily cleared both of them, then just prepare for interview part if you are solely focusing on CAPF. And DAF, a current affair, is the key part, along with the confidence, of course. ओके. और उन कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहोगे जो कैंडिडेट्स जो हैं उनकी एज जो है वो निकल चुकी है? इफ दे आर जनरल कैंडिडेट्स, दे हैव क्रॉस 25 एंड अकॉर्डिंगली टू द कैटेगरीज, और उन लोगों का सिलेक्शन सीएपीएफ में नहीं हो पाया, एंड दे वंस ड्रीम्ड कि हम तो सीएपीएफ में यूनिफॉर्म पहनेंगे ही पहनेंगे, एंड वी वांट टू सर्व दिस कंट्री बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट दे कुड नॉट बिकॉज दे पीपल वर इक्वली डिजर्विंग एंड समथिंग हैपेंड एंड देयर लक डिड नॉट फिट इन. सो अब वो निराश हैं, हो सकता है जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, क्या पता वो आपको देख के सोच रहे होंगे काश मैं भी ऐसे इंटरव्यू देता. तो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? See, just one have to keep in mind कि ये नहीं तो कुछ अच्छा ही मिलेगा. So positive mindset has to be there. And secondly, I would say कि अगर आपका नहीं हो पाया, you should guide others. जो mistakes आपने की है दूसरे ना करें. And third कि लक पार्ट हल्का चलता है, and never feel low, because मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी, I was conference out in succession. मैं हो क्या रहा है यार, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे फ्रेंड रिकमेंड हुए थे, इनमें सेम ही है, इशू कहाँ रह गया. सो सेकेंडली सबकी जर्नी अलग अलग होती है. जैसे मेरे फ्रेंड है, he got recommended in first attempt, one of my friend got recommended in 20th attempt. So both were really good, but तो उस टाइम की परफॉर्मेंस आपकी, that what matters. So never feel low, or just give your best. एज चलेगी तो क्या हुआ, देयर आल्सो many एग्जाम्स where you can go through it, that like TA भी होता है शायद आर्मी में, टेटोले आर्मी हो गया, if you are very passionate about joining forces, and civil service IPS is also there, UPS DSP. So there are many opportunities, just have to think about it and work hard, and you definitely achieve your aim. ये देखा अगर मैंने कर लिया ना तो कोई भी कर लेगा. 3 साल हो गए, हो ही जाएगा. सो सूरज कह रहे हैं कि सबकी जर्नी अलग होती है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम सबकी जर्नीज अलग है, और जरूरी नहीं है कि हम सब जो है एम जो है वो सेम एज पे सेम टाइम पे, क्योंकि हम सबके सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट है. So do not get bogged down एक एग्जाम की वजह से, and there is multiple opportunities out there in universe, and Suraj and I both are pretty sure that you will excel and you will achieve something very good in life. So Suraj, what is Definitely. your so what is your last message to the candidates who are going to appear in future, and also to the candidates who are going to appear in 2024? Okay, just two things. First of all, you have to keep your strategy, focused. कि एक ही strategy focus करनी है हमें. Resource बनाइए, practice कीजिए, test कीजिए, revise कीजिए. Paper 2 is all about practice, and grammar part को बिल्कुल lightly मत लीजिएगा, because this is the game changer. अगर एक भी part में कम आए और आपका selection नहीं हुआ, then you will definitely get regret. यार उसमें थोड़ा अच्छा कर देता. And thirdly, पीईटी और क्या फिजिकल में और मेडिकल में भी आप देख लीजिएगा कि यूर अप टू द स्टैंडर्ड्स. इंटरव्यू में डू योर बेस्ट, बिकॉज अगर आपने हल्की सी भी चूक की, इट मे लीड यू आउट ऑफ द लिस्ट. एक एक पार्ट को फोकस करना है. देयर आर एम्पल ऑफ वीडियोस इन योर चैनल ऑल्सो, अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. जस्ट फॉलो इट एंड ऑल्सो बिलीव योर सेल्फ, एंड जस्ट बिलीव सबकी जर्नी अलग अलग है, एंड योर डे विल ऑल्सो कम. या सो बेसिकली 2024 वाले कैंडिडेट्स के लिए बेसिक सा मैसेज है कि कीप योर स्ट्रैटेजी बिल्कुल मिनिमल, सब एक बिल्कुल प्रोफाउंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो गाइडेड तरीके से करनी है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, देन द CAPF AC mentors team is there. In fact, we will share Suraj Telegram handle also. You can also consult him if you have any doubt. So thank you, Suraj, and congratulations once again from the whole team of CAPF AC mentors. And I wish कि तुम और भी ज्यादा खुशियों की खबरें आते रहो, जिससे हम तुम्हारा बार बार इंटरव्यू लेते रहें. And thank you very much. So just thank you for having me here. I'm really glad कि यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. Because last time I contacted in 2020 where I was not able to clear exam. So Ravi sir was there. Sir, clear तो करके आऊँगा, कुछ हो जाए. So sir was also motivating. So this team has always been motivating for me. And I never gave interview just after my recommendation. I never give interview. But CAPF AC mentor is a special channel for me. It was always motivating. Janadar sir always called me. Suraj हुआ क्या? मैं बताता हूँ, help करता हूँ मैं. And also
This channel is the guiding factor for me in most of the exams. ओके. That's why I was giving you interview. सर यार यस. सर सो ने बोला है. वही बात होती है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो मेहनत तो बेशक हमारी हो, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कोई चैनल Definitely. हमें मिल जाता है जो हमें मोटिवेट करता है, हमारी फैमिली जो हमें सपोर्ट करती है. So thanks for mentioning CAPF AC mentors Ravi sir, Janardhan sir, who have motivated constantly throughout the journey. And in fact, I can say this that whatever pictures they used to upload on the channels, that used to motivate me. Ki, yeah, someday I will Definitely. also get into the list. So yeah, thank you सूरज. And I hope इस conversation को सुन के जो हमारे future ACs हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे, और इसी के साथ वो भी आगे ऐसे लिस्ट में आएंगे जिससे हम उनका इंटरव्यू ले सकें. थैंक यू सूरज. Thank you, sir. Thank you.